Hello dear students, welcome back to this lesson. Dear students, this lesson is a revision of the rules regarding changes in the tenses or backshifting of tenses when you convert the direct speech into the indirect speech. We will revise how to change the simple past tense from the direct to the indirect speech. So listen carefully and stay tuned till the end of this lesson. There is a special rule regarding this, as I discussed. The tenses may not change if the statement is still relevant or if it is a universal truth. You can often choose whether to keep it or change it. यह आवश्यक नहीं है कि पास्ट सिंपल टेंस को आप सदैव चेंज करें, हमेशा चेंज करें. यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंस ऑफ द स्टेटमेंट और अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स विच हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन स्टेटमेंट्स. It's not necessary that you should always change the past simple into the past perfect. Sometimes it's not changed. And that depends on its relevancy. यह कितना relevant है उस समय में, इस पर आधारित है उसे हम चेंज करें या नहीं करें. चलिए इसे अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम कैसे ज्ञात करें कि यह सेंटेंस रेलेवेंट है या क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या हम इस टेंस को चेंज करें या वी शुड कीप इट इन द ओरिजिनल टेंस. लेट्स टेक अप द एग्जाम्पल. इन द डायरेक्ट सेंटेंस I know her address, said Gopi. The indirect speech would be Gopi said that he knows or knew her address. In this sentence, आप दोनों तरीके से इसे चेंज कर सकते हैं. आप इसमें प्रेजेंट सिंपल का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि गोपी ने कहा कि वह उसका एड्रेस जानता है. I know her address. मैं उसका एड्रेस जानता हूँ. दिस इज़ द डायरेक्ट स्पीच. चूँकि गोपी उसका एड्रेस जानता है, यह बात अभी भी रेलेवेंट है. यह बीते समय की बात नहीं हुई. चूँकि यह अभी भी रेलेवेंट है तो हम इसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस भी यूज़ कर सकते हैं और पास्ट सिंपल भी यूज़ किया जा सकता है कि उस समय गोपी उसका एड्रेस जानता था. सो दिस डिपेंड्स ऑन दिस रेलेवेंस or context. Let's take up one more example. The teacher said the earth revolves around the sun. Dear students, please notice reported clause में यहाँ एक universal truth express किया गया है. The earth revolves around the sun. This is a fact. This is a universal truth. चूँकि यह एक universal truth है, इसके टेंस में हम कोई चेंज नहीं करते हैं. द टीचर सैड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ऑल्दो द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, बट वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस, दिस रिपोर्टेड क्लॉज, बिकॉज दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ. यह आज भी उतना ही सत्य है जितना यह कथन टीचर के द्वारा जब कहा गया था उस समय था. Now let's take up another example. German is easy to learn, she said. इस सेंटेंस में German is easy to learn यह रिपोर्टेड क्लॉज है. यह एक फैक्ट है. So यह फैक्ट आज भी उतना ही सही है जितना उस समय था जब इसे कहा गया था. So she said German is or was easy to learn. So we can keep the present tense or we can change it into the past simple if you are expressing the things in an objective manner. आप नहीं जानते कि German easy है या, then you can express this thing in the past tense if you are expressing the things in an objective manner. कि आपको अपनी उसके बारे में कोई राय नहीं देनी है या आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, then you can use the past tense. और अगर आप भी उस बात से सहमत हैं तो यू कैन एक्सप्रेस दैट थिंग इन द प्रेजेंट फॉर्म. सो इस एग्जाम्पल के थ्रू यह क्लियर होता है कि द पास्ट टेंस इज ऑफन यूज्ड व्हेन इट इज अनसर्टेन, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू और व्हेन वी आर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिवली. यदि हम किसी तथ्य के बारे में अनसर्टेन हैं
यानी हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि वह कथन सही है अथवा हम उसे ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट कर रहे हैं, then we change that tense into the past tense. Otherwise, we can keep the same tense, the present tense, for expressing some facts, for expressing some ideas. Now, let's take up the second rule of this lesson. If the reporting verb is in the present tense, the tenses of the direct speech do not change. For example, we may rewrite the above examples putting the reporting verb in the present tense. Dear students, यदि reporting verb present tense में है तो direct speech से indirect speech में change करते समय reported clause और quoted speech का tense change नहीं किया जाता है। यदि वह present में है तो उसे हम present में ही express करेंगे, यदि वह future में है तो उसे future में express किया जाएगा। इस लेसन में अभी तक जो एग्जाम्पल्स हमने स्टडी किए, मान लीजिए उनके रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, देन द प्रेजेंट टेंस ऑफ द रिपोर्टेड क्लॉज वुड नॉट बी चेंज्ड. ही सेज दैट ही इज अनवेल. सेज इज द प्रेजेंट फॉर्म. दिस रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस, so he is unwell. There is no change in the tense of the reported clause. He has just said that his master is writing letters. He has just said that his master is writing letters. In this example also, the reporting verb is in the present tense, so we would not change the tense of the reported clause. He says that he has passed the examination. Says is the reporting verb and it's in the present tense, so we have kept the tense and its original tense, and that is the present perfect tense. Now let's take up the third rule. The pronouns of the direct speech are changed where necessary so that their relations with the reporter and the listener rather than with the original speaker are indicated. Observe the following examples. प्रोनाउंस में हम चेंज क्यों करते हैं? जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, देन वी चेंज इन प्रोनाउंस. इसका रीज़न है कि जब रिपोर्टर और लिसनर इनके बीच का जो रिलेशन है वह क्लियर हो सके, और यह इसलिए कहा जाता है ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो. इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है, He said to me, I don't believe you. मान लीजिए आपको यह रिपोर्ट करना है किसी दूसरे व्यक्ति को. यदि आप उस व्यक्ति को जाकर डायरेक्टली यह कहते हैं, He said to me, I don't believe you. इससे यह मिसकम्युनिकेशन हो सकता है कि जो व्यक्ति अभी आपको सुन रहा है, जिसे आप रिपोर्ट कर रहे हैं, वह व्यक्ति यह समझ सकता है कि आप उन पर विश्वास नहीं करते हैं, कि आपको उन पर विश्वास नहीं है, जबकि यह वर्ड्स किसी और के हैं, आप सिर्फ उसे कन्वे कर रहे हैं. तो यह कम्युनिकेशन क्लियर हो, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं हो, इसलिए हम इसमें प्रोनाउन को चेंज करेंगे, क्योंकि यह आई किसको रिफर कर रहा है? दिस इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि इस सेंटेंस में ही है. ही सेड दैट ही डिडंट बिलीव मी. उसने मुझसे कहा. यू किस में परिवर्तित हुआ? मी, क्योंकि यू किसको रिफर कर रहा है? You is the second person pronoun and it refers to the object of the reporting verb. Said to is the reporting verb और इसका object है me. चूँकि यह me को refer कर रहा है तो यही pronoun यहाँ पर you के स्थान पर use किया जाएगा. Let's understand with one more example. Direct speech, she said to him, I don't believe you. In this example, we'll say that the pronoun I and you are changed. How? Let's see this in the indirect speech. She said that she didn't believe him. In this example, she said that she didn't believe him. I is changed into she. You is changed into him.
because this I refers to the subject of the reporting verb and that is she. You refers to object of the reporting verb and that is him. So I के स्थान पर she का और you के स्थान पर him का यूज किया गया है. Let's take up the next example. I said to him, I don't believe you. I said that I didn't believe him. So dear students, in this lesson we have revised the changes in tenses and change in pronouns. I hope with these illustrative examples, all the concepts related to change in tenses and change in pronouns are clear. Thank you for joining. Happy learning.